Hello everyone, I'm Somi Akhtar from Alamkul Institution, and today we are going to study about the second chapter, which is biological classification. And in this chapter, we have completed till Kingdom Monera, and now we will study about what is motility in bacteria and what are the structures in bacteria and what are the reproductive and asexual structures. Okay, so starting with the motility in bacteria. Motility in bacteria is on the basis of, we can say, their flagellar movement, presence or absence of flagella. They are of six types, basically most famous six types. One is athecus, other is monothecus, then amphithecus, then cephalothecus, and peritrichus. Okay, cephalotrichus, peritrichus, everything is there. So atrichus is what? When flagella are absent, means in this type of motility in bacteria, flagella is completely absent. An example is given like micrococcus and pasturella. Okay, now monotrichus is what? When only one flagellum is present on any one of the end of bacteria. Okay, like this, only one flagellum is present on any end, so it will be called as monotrichus. Now amphitrichus means one flagellum is present at both the end of bacteria. And then cephalotrichus means what? Group of flagellum is present at both the end of bacteria. And peritrichus, हर एंड पे यानी कि flagella is distributed all over the body of the bacteria. And the next one is the Lophotrichus. Lophotrichus is what? Group of flagella is present, yeah, bunch of flagella is present at only one end of the bacterium. So this is all about bacterial flagellars, means कि what are the arrangement of flagella in a bacterial cell. If flagella is present, then presence of flagella divided like amphitrichus, only one single flagellum is present at both the side. Then atrichus, flagellum absent. Bunch peritrichus में Lophotrichus में क्या? Bunch of flagellum is present at only one end. So there are different kinds of motility regarding this. Okay, now we will see what are the nutrition in bacteria, which is important because these are asked question in the needs also. Okay, so come across nutrition is what? The bacteria shows autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. What is the mode of nutrition in this? Autotrophic as well as heterotrophic. Some of the bacteria are autotrophic, means they are capable of making their own food and they are not dependent on anyone. But heterotrophic mode of nutrition is what? The bacteria are dependent on some other organism for the extraction of food. Okay, now if we say autotrophic bacteria, then they are further of two kinds. Let me erase this one. Okay, so autotrophic bacteria are two types. One is photosynthetic bacteria, another is chemosynthetic bacteria. So what is photosynthetic bacteria? The bacteria which make their food by trapping the solar energy, means like nowadays evolved plant does. Okay, now evolved plants do what? They trap the solar energy and try to make the food. So in the same way, those kind of bacteria which trap the solar energy and then make their own food, these kind of bacteria will come under photosynthetic bacteria. Okay, and where are they found? They are found at bottom of ponds and lakes. Now what are their kinds? Bacterial photosynthesis doesn't release oxygen. यहाँ पे एक major difference क्या है कि जो bacterial photosynthesis होता है, they are not capable of releasing the oxygen. Okay, otherwise अगर वो release करते तो वहीं से evolution शुरू हो जाता, change हो जाता पूरा evolution ही. But they are not releasing oxygen, instead they are releasing sulfur. Okay, so examples में क्या है? Purple sulfur bacteria, green sulfur bacteria and purple non-sulfur bacteria. तो purple sulfur के examples में क्या है? Chromatium, chlorobium, and green वाले में purple non-sulfur वाले में rhodospirillum. So these are the example of what? Photosynthetic bacteria. उसमें भी category है purple sulfur की, green sulfur की and purple non-sulfur bacteria की. ठीक. Now chemosynthetic bacteria में देखें तो chemosynthetic bacteria are those kind of bacteria which are not able to synthesize their food by their own. Okay, and they use they depend on some other processes for food manufacturing. Okay, and they require raw material. इनमें क्या आता है? Pigment absent रहता है. कौन सा pigment? जो chlorophyll kind of pigment जो है वो absent रहता है. ठीक है, ये अपना इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से फूड का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं करते हैं. So we will see these bacteria are able to synthesize organic food from inorganic raw material with the help of energy which are derived from chemical reaction. कौन कौन से बैक्टीरिया होंगे? नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया यानी कि नाइट्रोसोमोनास, आयरन बैक्टीरिया, फेरोबैसिलस,
सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया यानी कि बिगार्टिया, दीज आर सम ऑफ द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये कीमोलिसिस करते हैं, केमिकल वे से अपना रॉ मटेरियल या इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नाउ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में क्या रहते हैं, ये कंप्लीटली इनकेपेबल होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो डिपेंड करेंगे अदर सोर्सेज पे, और ये भी क्या होते हैं, तीन काइंड के हो जाएंगे, कौन कौन से, सैप्रोफाइट, पैरासाइट और सिम्बायोट्स, ठीक है। तो सैप्रोफाइट्स क्या हो जाएंगे, सैप्रोफाइट्स दोज बैक्टीरिया विच ऑब्टेन फूड बाय डिकम्पोजिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। सैप्रोफाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज they are only the reason या only one who are helpful in cleaning the environment. Suppose if everything is getting died and decayed on the land surface and it is not getting decomposed, then one time will come when earth will full of dead and decayed material, okay. So saprophyte bacteria yani ki those kind of bacteria which are feeding on dead and decaying organism are most important as a decomposer or detritivores, okay. They are most important in the food chain because they destroy the dead and decaying material by eating on them, okay. So these are the sporophytes. Now parasites is what, the disease causing bacteria. There are many parasitic bacteria which are causing the diseases. One of them is salmonella typhimurium, okay. Now symbionts क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया म्यूचुअल रहते हैं। सिम्बायोन्ट्स मतलब क्या, एक बैक्टीरिया या एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रह रहा है एंड बोथ आर गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम इट, यानी कि इफ वी से सिम्बायोसिस, so symbiosis is plus relationship, one organism is living with the other and both are getting benefited with this living system, that is why it is called as what, symbionts. So these bacteria live in mutually beneficial association with other organisms. What is the example, rhizobium and bacillus. From the this figure also we can see वही सेम चीज है, न्यूट्रिशन कैसे कैसे हो रहा है, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या है, दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, हेटरोट्रॉफ्स दे आर अनएबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। तो ऑटोट्रॉफ्स में कीमो ऑटोट्रॉफ्स है और फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स सोलर एनर्जी ट्रैप करके अपना फूड प्रोसेस करते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स रॉ मटेरियल यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज करते हैं और केमिकल वे में अपना फूड प्रोसेस करते हैं। देन हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या है, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और सिम्बायोन्ट्स भी हो सकते हैं। पैरासिटिक यानी कि दे फीड ऑन बीइंग पैरासाइट, पैरासाइट की तरह एक्ट करके किसी भी एनिमल या किसी भी मेजर ऑर्गेनिज्म पे स्टिक करेंगे, उसके अंदर रहेंगे या उसके बाहर, और उसके तरह उससे अपना न्यूट्रिशन लेंगे। सैप्रोफिटिक क्या होते हैं, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। Then symbionts मतलब one bacteria is living in association with some other organism and both are getting benefited from it, okay. Now let us see from this what is the nutrition. Nutrition means autotrophs, heterotrophs. Source क्या होता है, autotrophs का inorganic source है, heterotrophs का organic source होता है। then photoautotrophs होते हैं, chemoautotrophs as we have discussed also. phototrophs light के presence में होते हैं, pigment presence रहता है, inorganic form रहता है, chemicals synthesize होते हैं, inorganic रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है यहाँ पे देखो ऑक्सीजन नहीं रिलीज कर रहे हैं, क्या रिलीज कर रहे हैं, सल्फर। कार्बन डाइऑक्साइड will react with the help of hydrogen sulfide, which is hydrogen donor, and it will form glucose plus it will release sulfur. So water is not used in bacterial photosynthesis. Water नहीं use होता, hydrogen sulfide use होता है, H2S use होता है। Sulfur is the byproduct and not oxygen. पिगमेंट कौन कौन से हैं, बैक्टीरियो परप्यूरिन है एंड बैक्टीरियो विरिडिन है। दो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, परप्यूरिन पर्पल कलर का होता है और बैक्टीरियो विरिडिन ग्रीन कलर का। तभी हमने देखा कि तीन टाइप होते हैं, बैक्टीरियो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो तीन टाइप के पिगमेंट की वजह से क्या है, तीन टाइप के डिवीजन है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही, ठीक। तो बैक्टीरियो प्यूरिन पर्पल कलर के होंगे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अब बैक्टीरिया विरिडिन क्या है, ग्रीन कलर के होंगे तो इसमें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आएंगे। दोनों ही क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफिक है, न्यूट्रिशन बैक्टीरिया को प्रोवाइड करते हैं। नाउ हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में क्या है, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करते हैं। सोर्स इनका क्या है, ऑर्गेनिक सोर्स पे, यानी कि ऑर्गेनिक सोर्सेस को यूज करके अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। नाउ फोटो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉफ्स हो जाएंगे जो कि लाइट का यूज करेंगे, कीमो यानी कि मोस्टली केमिकल का यूज करेंगे। अब इसमें भी क्या है, फोटो हेटरोट्रॉफ्स वाले में पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, कीमो वाले में नहीं होंगे। सो मोटे मोटे तौर पे अगर हम लोग देखें तो न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, दो काइंड जो कि क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ जो खुद बना रहे हैं फूड, हेटरोट्रॉफ्स जो
खुद से फूड नहीं बना रहे हैं। ऑटोट्रॉप्स में भी दो तरीका, कीमो ऑटोट्रॉप्स और हेट्रो ऑटोट्रॉप्स। एंड कीमो वाले में जो केमिकल मेथड यूज कर रहे हैं, हेट्रो वाले फोटो वाले में जो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं। नाउ हेट्रो वाले में क्या है, पैरासिटिक मोड है, सैप्रोफिटिक मोड है और सिम्बायोटिक मोड है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया एंड मोटिलिटी इन बैक्टीरिया. In the next class we will discuss about respiration in bacteria. Okay, what is the respiration and what is reproduction process in bacteria, both the asexual and sexual method. So I will keep the class up to here today. Thank you. Bye. See you in the next class.